हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच परम पूज्य श्री भक्ति विद्याविलास नरसिंह महाराज हैं और वो भी इस शुभ कार्तिक के मास में, दामोदर के मास में। तो हमारा सौभाग्य है, हम में से काफी भक्त महाराज को पहले ही जानते होंगे। महाराज दामोदर देश में हर वर्ष आते हैं। पहले कोरोना के समय लगभग 2-3 वर्ष महाराज नहीं है, बट महाराज हर वर्ष यहाँ आते हैं। और महाराज इस आंदोलन से जुड़े लंदन में 1971 में, और महाराज शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और जो मुख्य देश महाराज जहाँ प्रचार करते हैं, भारत, अभी महाराज 3 वर्ष से भारत में थे। फिलीपींस, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड। और 1994 में महाराज ने श्री कमाल कृष्ण स्वामी महाराज से संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। तो फार ईस्ट में महाराज अधिकतर प्रचार करते हैं, चाइना में भी। अभी आप देखेंगे काफी भक्त चाइना से भी मायापुर में आते हैं, मायापुर में रहते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भाग्य है। और महाराज मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में भी सिखाते हैं कोर्सेज जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि। और हर वर्ष मायापुर परिक्रमा में भी वो इंटरनेशनल जो ग्रुप है वो उनके नियंत्रण में चलता है। तो इस प्रकार हमारा भाग्य है, आज हम सबको मौका मिला है महाराज से सुनने का। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आपका सेल फोन चेक कर लीजिए, मोबाइल सब लोग प्लीज साइलेंट पे डाल दीजिए। और अभी हम क्लास करेंगे और क्लास के अंत में किसी को कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो सभी का आने के लिए धन्यवाद। सबको इंग्लिश ठीक है या हिंदी अनुवाद की आवश्यकता है? इंग्लिश ठीक है सबको? ओके, थैंक यू। ऑल अंडरस्टैंडिंग। Om Ajnanatamrandasya Gyananjana Shamakaya Chaturmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yathapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Bharijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Sya. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Radha Kanchana Radhe Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Pranami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sorry Maharaj, few Mataji's require Hindi translation. Oh, sorry. So as you can see from the decorations here, as the altar is decorated with many forms of Damodar, Lord Krishna in his form of Damodar being bound with ropes by Mother Yashoda. तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मंदिर सजाया गया है, उसमें बहुत रूप है भगवान दामोदर के, जहाँ पर माँ यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांध रही है। So this month generally referred to as Kartika, which is the name of Srimati Radharani, and we also sometimes refer to this month as
the month of Damodar, because this is the time when this particular pastime of Lord Krishna took place. तो इस महीने का नाम है कार्तिक मास, जो श्रीमती राधा रानी का भी एक नाम है, और इस महीने का एक और नाम है दामोदर मास, जिस महीने भगवान की दामोदर लीला हो. So Lord Krishna's life, his childhood lila takes place in Vraja, in the land of Vrindavan or Mathura, and his life, his childhood lila is divided into 3 stages. तो भगवान की ये बाल्य लीलाएं हुई वृंदावन मथुरा में, और जो इनकी बाल्य लीलाएं हैं इनको 3 भागों में विभाजन किया गया है. Not only Lord Krishna, but actually all children. We think of their life in 3 stages. Generally, the first 5 years is what we call the Kumar stage. तो केवल कृष्ण भगवान ही नहीं, हर बच्चे की जो बचपन होता है उसको 3 भागों में विभाजन किया जाता है. तो पहला होता है 5 साल की उम्र तक, जिसे कुमार अवस्था कहते हैं. For the first 5 years, the child's at home with the mother. Mother's taking care of the child, feeding her breast milk and so on. The child is very much dependent on the mother and is just engaged in playing around the home. तो पहले 5 वर्ष बच्चा घर में ही रहता है, माँ बच्चे को ध्यान रखती है, अपने स्तन से दूध पिलाती है. तो ये पहले के जो 5 वर्ष है इसमें बच्चा घर में है और माँ उसकी हर प्रकार से देखभाल कर रही है घर में. And then the next stage is called Poganda. That's from the age of 5 up to the age of 10. And at that time, Lord Krishna was given charge of the calves. और फिर अगले 5 साल से लेके 10 साल तक इसको कहा गया है पौगंडा, और इस समय भगवान को बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी जाती है. In Vrindavan, 5,000 years ago, there was no schooling. You know, the child was brought up in the home of Nanda Maharaj. Nanda Maharaj was a Vaishya, and the children born into the families in that community, they would naturally also grow up to be Vaishya. And Vaishya in those days meant taking care of the cows. तो 5000 वर्ष पहले वृंदावन में विद्यालय नहीं होते थे. तो कृष्णा का जन्म हुआ था नंद महाराज के घर में, और नंद महाराज वैश्य हैं, और इसलिए ऐसा होता था कि वैश्य के घर में जो जन्मा है वो आगे चल के वैश्य ही बनेगा. तो वैश्य के कार्य उसे सिखाए जाते थे, और वैश्य का मुख्य कार्य होता था गाय की देखभाल करना. And then the third stage of the childhood is what is called Keshor. And that's from the age of 11 up to 15, end of the 15th year. And at that time, Lord Krishna is given charge of the cows, no longer just taking care of calves, but he's given the cows. उसके बाद का जो भाग होता है वो होता है किशोर, जो होता है 11 साल से लेके 15 साल तक, और इस दौरान कृष्ण को बच्चों से छोड़ के अब गायों की जिम्मेदारी दी गई थी. They just celebrated actually the festival where Krishna graduates from taking care of the calves to taking care of the cows. It's a day called Gopastami. And in that day, the cows are given a lot of special food and they're treated really nicely, special care. तो हाल ही में हम मनाते हैं वो दिन जब कृष्ण को बछड़ों को छोड़ के गांव की जिम्मेदारी दी जाती है, और उस दिन को मनाया जाता है गोपाष्टमी कहते हुए. तो ये वो दिन है गोपाष्टमी पे जो गायें हैं उनको विभिन्न प्रकार के पदार्थ खाने के लिए दिए जाते हैं. As devotees of Lord Krishna, we're very much concerned for the welfare of cows. Lord Krishna is described that we say Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Cha, right? You all know that version. It's well known. It means that the cows and the brahmanas are both very dear to Lord Krishna. So devotees of Krishna, we always think a lot about the cows, and we think about pleasing the cows and serving the cows.
तो भगवान कृष्ण के भक्त होने के नाते हम भी गायों के शुभ चिंतक रहते हैं। हमें वो श्लोक पता होगा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। तो भगवान को गाय और ब्राह्मण प्रिय है। तो भगवान के भक्त होने के नाते हम भी हमेशा ये देखना चाहते हैं कि गाय और ब्राह्मण प्रसन्न रहे। So Lord Krishna grew up with the cowherds, people there in Vrindavan. And after, when he was 11 years old, actually, Lord Krishna's life was a little different from normal children because he matured very quickly. Being, because he's divine, he's not an ordinary child. He's a divine person. He's the Supreme Lord. So, although it's supposed to be the first 5 years, Lord Krishna was only 3 years and 4 months. And that when he went to the next stage, after 3 years and 4 months. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हुए वृंदावन में गोपों के साथ। और भगवान कृष्ण जिस प्रकार बड़े हुए वो साधारण लोगों के बड़े होने से जल्दी था, क्योंकि भगवान दिव्य है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो आमतौर पर जो कुमार अवस्था होती थी 5 वर्ष तक, जब भगवान उससे निकले उनकी उम्र उस समय केवल 3 वर्ष और 4 महीने ही थी। So 3 years and 4 months in the Kumar stage. So when he was 3 years and 4 months, then he was given the calves, and he was in the Poganda stage for another 3 years and 4 months. So that was 6 years and 8 months. And then the Kishore part, where he was with the cows, another 3 years and 4 months. So altogether, that 10 years were completed. So he was beginning his 11th year when he left Vrindavan and went to Mathura. तो इस प्रकार से भगवान ने कौमार अवस्था में 3 वर्ष और 4 महीने बिताए, और फिर जो दूसरा भाग आता है पौगंडा, उसमें भी वो 5 वर्ष के बजाय जल्दी केवल 3 वर्ष और 4 महीने बिताए। और कौमार अवस्था में भी किशोर अवस्था में पहुंच गए, फिर और उसमें 3 साल 4 महीने बिताए। तो इस प्रकार जब वो वृंदावन छोड़ के गए तब उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष हो चुकी थी। So at the age of 11, Kamsa had sent Akrura from Mathura to go to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to Mathura. तो जब इस प्रकार 11 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने अक्रूर को भेजा था कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आने के लिए। Krishna had spent his first 11 years or first 10 years there in Vrindavan. But Kamsa understood that this child was the one who was supposed to kill him. So Kamsa had arranged a wrestling match there in Mathura. कृष्ण ने पहले 11 वर्ष वृंदावन में बिताए, और फिर कंस को पता पड़ गया था कि कृष्ण ही वो बच्चा है जो उसे मार डालेगा। तो इसलिए कंस ने कृष्ण को बुलाया और एक कुश्ती की लड़ाई रखी थी मथुरा में। Now, sometimes if you see a wrestling match, maybe on television or something, you've seen wrestling match. Usually the people are, they're balanced, they're equal weight, equal size, they're both big, strong people or something, You wouldn't have a big, strong person fighting a little thin person, They should be equally balanced, equally matched. तो जब आप कुश्ती की लड़ाई देखते होंगे, कभी भी चलचित्र ऐसे आता है, तो आप देखते होंगे कि जब ऐसे कुश्ती की लड़ाई होती है तब जो दो लोग लड़ रहे हैं दोनों बराबर के होते हैं, दोनों बराबर की शक्ति के होते हैं, बराबर की वजन के होते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि लड़ रहा है एक बहुत बड़ा है और एक बिल्कुल पतले आदमी के साथ लड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। So this Kamsa had arranged a wrestling match for Lord Krishna and Lord Balaram, but it wasn't very fair. The wrestlers were like mountains; they were huge, and their arms and their whole body was like rocks. And there's Krishna and Balaram; they're just 11 years old. They're cowherd boys, and their bodies are soft and they're quite small and frail looking.
compared to these wrestlers. तो इस प्रकार से कंस ने जो ये कुश्ती की लड़ाई रखी थी वो एक तरीके से सही नहीं थी, क्योंकि जो लड़ रहे हैं कृष्ण और बलराम से वो एकदम पहाड़ की तरह तगड़े थे, और यहाँ कृष्ण बलराम छोटे बच्चे हैं, पतले हैं, उनका शरीर कोमल है, नरम है। तो इस प्रकार से उसने जो ये कुश्ती का युद्ध रखा था ये एक तरीके से सही नहीं था, इतना बड़ा आदमी ऐसे छोटे बच्चों से लड़े। If you have our books, if you have the Krishna book or maybe the Srimad Bhagavatam, you can look at the illustration. You will see how the artists have depicted this lila in the painting. It's very interesting to see. तो अगर आपके पास हमारी कृष्ण पुस्तक नामक किताब है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चित्रकार ने इस लीला को उसका चित्र उतारा है। बहुत दिलचस्प है ये चित्र। But anyway, Krishna and Balaram, they're cowherd boys, and every day they would go to the forests in Vrindavan when they were children. And you know, children like to wrestle. They like to fight with each other and wrestle. And so when Krishna and Balaram came to Mathura, they said, is this fair? Is this proper? And they said, well, you know, you're cowherd boys. Every day we know you're playing very nicely. You're wrestling in the forests in Vrindavan every day. We know you're a good wrestler. तो कृष्ण बलराम क्योंकि वो जब वृंदावन में रहते थे, वो वनों में जाते थे, तो वो आदी थे इस प्रकार से वन में जाके कुश्ती करने के लिए। तो जब वो यहाँ पर आए मथुरा में, तब जब उन्होंने उन जिनसे लड़ना है उनको देखा तो उन्होंने पूछा क्या आपको लगता है ये सही है, हमको इनसे लड़ा रहे हो? तब उन्होंने कहा हाँ सही है, आप लोग तो हम जानते हैं, आप लोग तो वृंदावन में वनों में जाते हो और आप तो वैसे ही कुश्ती लड़ने के आदी हो, तो हम जानते हैं आपको अच्छे से कुश्ती आती है। So Lord Krishna and Lord Balaram entered the arena in Mathura. And Nanda Maharaj and the other cowherd men, they'd all come from Vrindavan to see the wrestling match. The gopis didn't come. The gopis stayed behind. They have to take care of the cows and they have children to take care of. So that time the gopis didn't come. तो इस प्रकार से जब कुश्ती के मैदान में कृष्ण बलराम आए कुश्ती करने के लिए, तो वहां पर नंद महाराज और भी जो पुरुष हैं वो वृंदावन से आए थे, वो कुश्ती को देख रहे थे, परंतु जो गोपियां हैं वो नहीं आई थी। उनको गायों का ख्याल रखना था, अपने बच्चों का ख्याल रखना था, तो वो नहीं आई थी। But it's okay. The gopis will get an opportunity later on to be with Krishna. परंतु ठीक है ये, क्योंकि गोपियों को पुनः अवसर प्राप्त होगा कृष्ण के साथ रहने के लिए। And that happened at Kurukshetra. और ये अवसर उन्हें मिला कुरुक्षेत्र में। Anyway, today we're talking about this Damodardesh, which took place while Krishna is still at the Kumar stage. He's not yet reached even 3 years or 4 months. He's still a small child. तो आज हम जो लीला की बात कर रहे हैं वो है ये दामोदर लीला की। इस लीला में कृष्ण अभी छोटी उम्र के हैं, वो कुमार अवस्था भी अभी नहीं पहुंचे हैं, वो केवल 3 वर्ष के लगभग अभी उनकी उम्र है। So as a child, young child, naturally, what does the child like? He wants to drink the milk from the mother's breast. तो छोटे बालक होने के नाते छोटे बच्चों को क्या पसंद आता है? उनको माँ के स्तन से दूध पीना पसंद आता है। And Lord Krishna grew up in that way for the first 3 years or more. He was just simply living on the breast milk of his mother. तो इस प्रकार से कुमार अवस्था में कृष्ण आदि थे अपने माँ के स्तन पे रह के उनका दूध पीने के लिए। So it happened, Mother Yashoda wants to take good care for her son. So she had some cows, she had some very special cows who were giving very nice sweet milk. तो इस प्रकार से माँ यशोदा चाहती थी कि अपने पुत्र की अच्छे से देखभाल करें, अच्छे से ख्याल रखें, और माँ यशोदा के पास कुछ विशेष गायें थी जो बहुत विशेष दूध दिया करती थी। Do you all like milk? आप सभी को दूध पसंद है?
Some people, they say, no, I like Coca-Cola. कोई लोग कहते हैं उन्हें कोका कोला पीना पसंद. They say, drink Coca-Cola, don't drink milk. So this is the, the modern thinking, people are so unhealthy. They don't know the value in drinking cow's milk. तो ये आधुनिक समय है, लोग ज्यादातर स्वास्थ्य के विषय में रुचि नहीं रखते, अस्वस्थ जीवन बिताते हैं. उन्हें पता ही नहीं है कि दूध, गाय के दूध पीने से क्या क्या लाभ होता है. Prabhupada told us that just by drinking milk, you can get pious activities. Nowadays, of course, they have this vegan thing. People don't want to drink milk. तो प्रभुपाद जी ने हमें कहा कि केवल दूध पी के आप शुभ कार्य कर सकते हो. पर अभी ये लोगों ने एक नया बात और निकाला है, वो कहते हैं वेगन, मतलब ये दूध भी नहीं पीना चाहते हैं. In some ways, the vegan is right because the cows are so badly treated that when the cows don't give milk anymore, then the farmer will simply kill them. तो एक तरीके से ये जो वेगन का जो नया ये बात आजकल निकला है समाज में, एक तरीके से ये सही है, क्योंकि कभी-कभी देखा जाता है कि गायों को बहुत बुरी तरीके से उनसे बर्ताव किया जाता है, यहाँ तक कि कभी जब वो दूध देना बंद कर देती है तो जो किसान है वो उसे मार डालता है. So we see, like in India, wherever there's a temple, the temple will keep their own cows. And with their own cows, they will have milk, which they can offer for the deity, which is worshipped in the temple. तो भारत में हम खास तौर से देख सकते हैं कि हर मंदिर में अपना गौशाला होता है, अपनी गायें होती हैं, और वो गायों से वो दूध निकालते हैं और वो दूध भगवान को भोग लगाते हैं. But the people are so cruel today. They just keep the cow, and as soon as there's no milk, they have it slaughtered. They think there's no value in the whole cow. तो आजकल लोग बड़े क्रूर हैं. वो सोचते हैं कि ठीक है गाय रखते हैं, लेकिन जब तक गाय दूध देती है, जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बोलते हैं अब इसको रखने का क्या फायदा, फिर उसे मार डालते हैं. That's just like it. So long as you're working, you have a job here in Dubai, it's okay. But as soon as you have no job, as soon as you're retired, let me just kill you, right? तो एक प्रकार से ऐसा है कि अगर आप यहाँ हैं और आपको नौकरी है तो ठीक है, लेकिन जैसे आपकी नौकरी चली जाए फिर आप भी जाओ. So that it's a very cruel way of dealing with the cow. The cow is very sacred. The cow is one of the mothers, 7 mothers. Cow is one of our mothers. So we give great importance and respect, try to take care of the cows. And we have our own cows, like some of our temples. They're fortunate. They have cows, like in London. In our Bhaktivedanta manor, we have a herd of cows. And the milk there, we also retail it. We call it as ahimsa milk. इस प्रकार से हमें गायों की देखभाल करनी चाहिए, और हम देखते हैं हमारे मंदिरों में अपनी गाय होती है, जैसे विशेष करके लंदन में भक्ति वेदांत मैनर है, वहाँ अपनी गाय है, और उनसे जो दूध निकलता है उसे हम शीर्षक देते हैं ये अहिंसा दूध. Ahimsa means no violence, non-violence, because we take care of the cows, and even they're not giving milk, we will still take care of them and protect them. ये अहिंसा दूध है. अहिंसा मतलब उस गाय पे हिंसा नहीं हो रही है. तो अगर ये गाय बाद में जाके दूध देना बंद भी कर ले तो भी हम उसकी देखभाल करते हैं. So Lord Krishna was a young child, and he was drinking his mother's milk. But his mother was also, as a gopi, she had also duties to do at home. She can't just sit around all day. She, as well as taking care of her child, she was also wants to prepare some milk and yogurt and ghee for Lord Krishna. इस प्रकार से हम देखते हैं माँ यशोदा भी कृष्ण की पूरी देखभाल करती हैं, ध्यान से उनके लिए कार्य करती हैं, परंतु ये पूरा समय कृष्ण को नहीं दे पाएंगी क्योंकि इनकी और जिम्मेदारियां भी हैं. जैसे कृष्ण के लिए ही उन्हें कुछ दूध, दही, मक्खन इत्यादि बनाना है ताकि वो बाद में कृष्ण को ही खिला सके. Mother Yashoda likes to cook for her son.
She doesn't want anybody else to cook because she loves her son so much that she wants to cook for him. माँ यशोदा स्वयं अपने पुत्र कृष्ण के लिए पकाना चाहती है क्योंकि वो उनसे इतना प्रेम करती है. वो नहीं चाहती है कि कोई और कृष्ण को पका के खिलाए, वो स्वयं उसके लिए पकाना चाहती है. And she's another reason why she's cooking is she wants to make it so nice because she knows that sometimes my son goes to the neighbors and he will steal the butter and milk from the neighbors. So I want him to get from our own home. He doesn't need to go to the other gopis to steal it. He should have it at home. So I want to make this so nice that he won't go to the neighbor's house. और दूसरा कारण वो खुद पकाना चाहती है कृष्ण के लिए क्योंकि वो देखना चाहती है कि ये बहुत उत्तम श्रेणी का पदार्थ बना है कृष्ण के लिए. क्योंकि कभी-कभी वो बोलती है कृष्ण बाहर जाके भी अन्य गोपियों के घर से चुरा के खा रहा है, तो वो सबसे अच्छा बनाना चाहती है कृष्ण के लिए ताकि वो बाहर जाके चोरी करना बंद कर दे. And Mother Yashoda is also going to offer it to Lord Narayan, and she knows this will be the best for Lord Krishna. और माँ यशोदा इसे नारायण को भी अर्पित करना चाहती है क्योंकि वो जानती है फिर ये कृष्ण के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा. So Mother Yashoda had these special cows, a little group of cows who were giving the best milk, and she would make sure they got the best grass, because if they get very nice grasses, then they'll give more and more sweet milk. तो माँ यशोदा के पास एक विशेष समूह था गायों का जो बहुत उत्तम दूध देती थे, और माँ यशोदा उन गायों को बिल्कुल विशेष बहुत उत्तम श्रेणी का घास खिलाती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये घास खाएंगी तो उनका दूध और भी मीठा होगा. So Mother Yashoda had collected this milk from these very nice cows, and she had that milk on the stove. She was boiling the milk. You have to boil the milk. There's going to be some water there in the milk, and you have to boil off the water, and the milk becomes even thicker and sweeter. तो माँ यशोदा ने ये दूध इकट्ठा किया था उन गायों से, और दूध को तैयारी करने के लिए वो इसे उबाल रही थी क्योंकि ये आमतौर पे होता है कि जब वो दूध निकलता है उसमें भी थोड़ा पानी होता है, तो जब दूध को उबाला जाता है तो पानी निकल जाता है, तो केवल बहुत मधुर दूध रहता है. So Mother Yashoda was feeding baby Krishna. She'd got baby Krishna on her lap, and baby Krishna sucking away at her breast, drinking her milk. When Mother Yashoda remembers that, oh, the milk is on the stove and it's boiling over, she has to put Krishna down immediately and go running over to stop the milk boiling over. तो इस प्रकार से कृष्णा माँ यशोदा के स्थान पे चिपके हुए हैं, उनका दूध पी रहे हैं, और फिर उनको एहसास होता है कि अरे वो जो दूध मैंने उबलने के लिए रखा है वो अब गर्म होके उबल रहा है और गिर जाएगा, तो इसलिए मुझे उसको बचाना होगा, वो कृष्ण के लिए ही है, तो उसे छोड़ के वहां ध्यान देने जाती है. So when Mother Yashoda put down baby Krishna, Krishna got a little angry. तो जब माँ यशोदा ने छोटे कृष्ण को उतार दिया तो कृष्ण को थोड़ा गुस्सा आ गया. He's thinking, I was enjoying my mother's milk, and she's gone off to take care of that other milk. वो कह रहे हैं अरे मैं मेरी माँ के दूध का आनंद उठा रहा था, अब ये मुझे छोड़ के गई है दूसरे दूध को संभालने के लिए. Krishna is thinking, she's not taking care of me, she's just taking care of that milk. कृष्ण सोच रहे हैं ये मेरा ख्याल नहीं रख रही है, ये केवल उस दूध का ख्याल रख रही है. Now earlier I was telling you about Krishna and Balaram, how they came to Mathura for the wrestling match, and so the wrestlers were punching Krishna and Balaram. तो अभी ही कथा में मैं पहले आपको बता रहा था कि कैसे कृष्ण और बलराम मथुरा आए कुश्ती के लिए, और कुश्ती की शुरुआत में जिन से वो लड़ रहे थे वो दोनों ही कृष्ण बलराम को मुक्के मार रहे थे. Sometimes, these wrestling matches that they punch each other. So these big wrestlers who were like rocks, they were punching at Krishna and Balaram. But Krishna and Balaram, they're not feeling any pain. Rather, they're enjoying this. They're taking pleasure in these people punching them. इस प्रकार से बड़े बड़े सांड जैसे बिल्कुल पहाड़ जैसे तगड़े ये दोनों जो कृष्ण से कुश्ती कर रहे हैं, कृष्ण बलराम को मारे जा रहे हैं मुक्के, परंतु कृष्ण बलराम को ये मुक्के पाके कोई चोट नहीं लग रही थी. वो तो इस प्रकार के ये जो मुक्के मार रहे हैं उसमें भी आनंद उठा रहे थे.
Krishna's body is not material. Krishna has a spiritual body. So he doesn't feel pain like what we would feel. So somebody is punching him, he's enjoying it. तो कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, तो इसलिए जब उन्हें कोई मार रहा था उन्हें दर्द नहीं हो रहा था, हमारी तरह नहीं है, हमें कोई मुक्के मारेगा तो दर्द होगा, तो इसलिए कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है, तो जब उनको भी मुक्के पड़ रहे थे वो इसका आनंद उठा रहे थे. And Mother Yashoda, she's put down Krishna and gone off to take care of the milk. Krishna's angry, he's not happy with her. तो माँ यशोदा ने कृष्ण को उतारा है और दूध का ख्याल करने गई है, तो कृष्ण को ये बात पसंद नहीं आई, वो इससे खुश नहीं है, वो माँ यशोदा से क्रोधित है. So it seems strange that Mother Yashoda's made Krishna angry and she's supposed to be a great devotee. And these wrestlers who are in the arena fighting with, they're punching Krishna, and Krishna's happy. Krishna's enjoying this. But these wrestlers are demons. तो यहाँ पर हमें थोड़ा विरोधाभास लग सकता है कि माँ यशोदा कृष्ण को गुस्सा दिला दी है और हम कहते हैं कि वो कृष्ण की बड़ी भक्त है, और वहां पर जो लड़ रहे हैं कृष्ण से कुश्ती में, तो वो कृष्ण को आनंद दे रहे हैं, हालांकि वो कृष्ण को मार रहे हैं. तो यहाँ हमें विरोधाभास थोड़ा प्रतीत हो सकता है. So can you see the problem? You know, we're thinking, you know, Mother Yashoda is a devotee. She's made Krishna angry. Has she gone against her? Is she a devotee or not? यहाँ पर आप समस्या समझ सकते हैं कि माँ यशोदा ने कृष्ण को दुखी किया है, उसे गुस्सा दिला दिया है. तो क्या आप अभी कहते हैं माँ यशोदा अभी भी भगवान की बड़ी भक्त है? No, she's a devotee. Why did she make Krishna angry? Well, actually, she's gone to take care of the milk for Krishna. That milk is for Krishna, right? She wants to give that milk to Krishna. She thinks if that milk all boils over and goes on the stove, I have no milk to feed Krishna. So I have to save the milk. I want to give this very nice milk for my son, for baby Krishna. तो माँ यशोदा ने उस समय कृष्ण को उतारा था, तो वो दूध के चक्कर में गई थी, लेकिन वो दूध भी वो बना के उसे कृष्ण को ही पिलाना चाहती थी. उनका कारण अभी भी कृष्ण ही था कि कैसे मैं ये दूध को बचा लूं और वो उसको कृष्ण को पिला पाऊं. Does Krishna need the milk? Now we say Krishna is the Supreme Lord. Everything is his. He doesn't need anything. Everything is his. He doesn't need our offering. When we're offering fruits and flowers, does he need them? No, he doesn't really need them, right? He has everything. He doesn't need Mother Yashoda's milk, but he's enjoying this loving exchange with his devotee. तो क्या हम कह सकते हैं कि कृष्ण को दूध चाहिए क्या? कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है. हम मंदिर में भी उनको फूल इत्यादि इतनी सामान चढ़ाते हैं, तो हमें क्या लगता है कृष्ण को इन सब की जरूरत है क्या? नहीं, कृष्ण को इन सब की जरूरत नहीं है, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है. परंतु जब माँ यशोदा उनको ये दूध पिला रही है, ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, ये प्रेम का आस्वादन कृष्ण करना चाहते हैं. So Krishna is enjoying this wonderful exchange. He's showing some anger, but the anger is due to his loving feeling for Mother Yashoda, that he's thinking that why Yashoda is neglecting me just for some milk. She should give her love to me. Why is she showing so much love for the milk? But that milk is because she wants to give it to Krishna. यहाँ पर भी कृष्ण वास्तव में क्रोधित नहीं है, वो जो इस प्रेम का आदान प्रदान है उनकी माँ के साथ, उसमें आनंद उठा रहे हैं. तो वो सिर्फ सोच रहे हैं कि क्यों मेरी माँ मुझे छोड़ के गई है दूध के लिए, परंतु माँ का कारण है वो दूध भी कृष्ण को ही पिलाना चाहती थी. And sometimes it's said that in Vrindavan everything is conscious, so the milk is also conscious, and the milk was seeing the loving exchange between Mother Yashoda and Lord Krishna,
And the milk was thinking that, oh, Krishna's enjoying the milk from Mother Yashoda's breast. Krishna won't want my milk. My life is useless. And the milk thought, I might as well commit suicide. I might as well give up my life. And in this way, the milk boiled over. तो हम ये भी सुनते हैं कि वृंदावन में कहा जाता है सब कुछ चीज चेतन होती है, सब में चेतना होती है। तो ये जो दूध उबल के आ रहा था, ये दूध कृष्ण और उनकी माँ के बीच में जो प्रेम का संबंध है, जो कृष्ण दूध पी रहे हैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि अरे अब कृष्ण इस माँ यशोदा का दूध पी लेगा तो मुझे नहीं पिएगा, तो मेरे जीवित होने का क्या फायदा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, इसलिए वो उबल के गिरने आया था। So in this way, Lord Krishna was put down on the ground while Mother Yashoda went to take care of the milk. So Lord Krishna thinks, I have to do some mischief. Just he's a young child. You know, young children that age, they like to crawl around everywhere and they want to take everything and grab everything. So Lord Krishna saw the pot of yogurt which Mother Yashoda had been churning into butter. तो भगवान कृष्ण को ये देख के जब गुस्सा आता है तो वो बोलते हैं अब मैं कुछ शरारत करूंगा। तो आप जानते हैं उस उम्र में जब बच्चे होते हैं उनको इधर उधर रेंगते हुए जाना, इधर उधर जाना, ये शरारत करना पसंद आता है। तो कृष्ण भी सोचते हैं अब मैं कुछ शरारत करूंगा। वो मटका देखते हैं जिसमें माँ दही का मंथन कर रही थी। Lord Krishna is very clever. He got a stone and very carefully he broke the bottom of the pot and took out all the yogurt from the pot. He's taking it and he's giving it to the monkeys and taking some for himself. भगवान कृष्ण शरारती हैं, उन्हें पत्थर का टुकड़ा मिला, उस पत्थर के टुकड़े से उन्हें मटका फोड़ दिया और मक्खन निकाला और कुछ मक्खन खुद खा रहे हैं, कुछ बंदरों को खिला रहे हैं। He did it all in such a way that didn't make much noise. Mother Yashoda wasn't alerted to what was going on. He was doing it all in a very silent manner. और कृष्ण ने ये सब कुछ इस प्रकार किया कि ये शरारत करते समय इतना आवाज नहीं हुआ, बहुत शांति से उन्होंने किया, तो उनकी माँ भी सावधान नहीं हुई कि क्या हो रहा है। So then Lord Krishna realized that he'd done something which was going to upset his mother. And he thought he'd better move away. He got out of that room, went to another room. और भगवान कृष्ण को ये लगा उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे उनकी माँ परेशान हो जाएगी, तो उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले गए। And then Mother Yashoda comes back after taking care of the milk, and she sees all things Krishna's done. He's broken the pots, and there's yogurt and butter all over the place. तो माँ यशोदा दूसरे कमरे में आती है और देखती है इसने सब मटके तोड़ दिए हैं और इधर उधर हर जगह दही और मक्खन गिरा हुआ है। Mother Yashoda, she'd been churning the butter, the yogurt into butter. She has this stick which she uses for churning. So she came back, she's carrying this stick. And so then she's looking, where's my son? Where is Krishna? Where's he gone? तो माँ यशोदा के पास वो लकड़ी का टुकड़ा होता था जिससे वो मंथन किया करती थी, तो लकड़ी को लेके आती है और वो देखती है क्या हो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ चले गया है। And she goes looking around and Krishna is sitting with the monkeys eating the yogurt. At the same time he sees his mother coming. So when he sees his mother coming with a stick in her hand, then he becomes afraid and he jumps up and he runs. तो कृष्ण की माता यशोदा जब जाती है और देखती है ये उसके हाथ में डंडा है और वो देखती है कृष्ण वहां बैठा है बंदरों के साथ और उन्हें खिला रहा है, तो जब कृष्ण अपनी माँ को आते हुए देखता है तो भयभीत हो जाता है और तुरंत भागने लगता है। Mother Yashoda, she's a heavier woman. You know, she's in the Vaishya family. They have a lot of cows, they have a lot of milk. You drink a lot of milk, you can get healthy. You can put on weight easy with a lot of milk products. If you eat a lot of cheese and butter and yogurt, all these things, it's very easy to put on weight. So Mother Yashoda was a little healthier woman. She couldn't run very fast. Krishna's a little boy, he was running. And Mother Yashoda is chasing him and she's carrying her stick as well in her hand. तो इस प्रकार से हम माँ यशोदा है थोड़ी स्वस्थ थी, भारी वजन की थी,
तो हम जानते हैं कि जब माँ यशोदा वैश्य परिवार से है और दूध उनके पास काफी है, और हम जानते भी हैं यदि कोई दूध ज्यादा पीता है या दूध की बनाई गई चीजें ज्यादा खाता है, जैसे मक्खन, दही, चीज, तो जल्दी ही हमारा स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो माँ यशोदा इस प्रकार थोड़ी स्वस्थ थी, भारी वजन की थी, और वो कृष्ण को पीछे भाग रही थी। And so Mother Yashoda is shouting to Krishna, come back, come here, come here. And Krishna is saying, no, no, you've got that stick in your hand, I'm not coming. तो माँ यशोदा चिल्ला के कृष्ण को बोल रही है, क्यों भाग रहा है, पीछे आ, वापस पीछे आ। और कृष्णा कह रहा है, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तेरे हाथ में डंडा है, उसको फेंक दे, मैं नहीं आऊंगा। Of course, Mother Yashoda loves Krishna very much. She's not going to beat him. बेशक माँ यशोदा कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, उसे मारेंगी नहीं। Prabhupada said to the teachers in the Gurukula, he said, you don't beat the children. He said, you may show the stick to them and threaten them, but you don't use it. जो गुरुकुल में शिक्षक हैं, उन्हें श्रीला प्रभुपाद ने कहा था, आप बच्चों को मारना नहीं चाहिए, आप डंडा दिखा सकते हो, लेकिन उसका उपयोग मत करना। So Mother Yashoda was, because she'd been churning the butter, she had that stick. She didn't have the intention to beat Krishna. क्योंकि माँ यशोदा मक्खन का दही का मंथन कर रही थी, तो उनके हाथ में वो डंडे का टुकड़ा था, उनका इरादा नहीं था कृष्ण को मारने का। Anyway, Lord Krishna said, I'll come back, but you have to put the stick down. I'm not going to come back till you put the stick down. So Mother Yashoda puts the stick down, and Krishna comes to Mother Yashoda. And then Mother Yashoda considers what to do with this child, that he's so mischievous. That if I don't do something to restrict him, he'll go to the neighbors and he'll create trouble for all the neighbors. So she decides she'll try to tie him up, to keep him in their own yard. तो इस प्रकार से कृष्ण नहीं आ रहा था उनके पास, फिर माँ यशोदा वो डंडा फेंक देती है, फिर कृष्ण आता है और उन्हें पकड़ लेती है, परंतु वो सोचने लगती है, इस बच्चे का मैं क्या करूं, इतना शरारती है, इधर उधर जाके शरारत कर रहा है, तो मैं क्या करूं। तो वो सोचती है, चलो इसको मैं आज बांध देती हूँ, ताकि वो कहाँ जाए नहीं। So Mother Yashoda got some rope and she thought she'd tie Krishna up. You can see on the Mother Yashoda there's this mortar there which was used. And she ties Krishna to this mortar to restrict him running here and there. तो वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर एक उत्कल है, तो वो कृष्ण को उससे बांधने के लिए लेके आती है, ताकि कृष्ण इधर उधर नहीं भाग पाए। But the problem was the rope wasn't long enough. Mother Yashoda tried to tie the rope, it wasn't long enough. She got more rope, wasn't long enough, still wasn't long enough. And she got more rope and more rope, it was never long enough. It was always just too short. समस्या ये हो रही थी कि रस्सी पूरी नहीं पड़ रही थी, रस्सी ला रही है बांधने के लिए, लेकिन हर समय थोड़ी रस्सी कम ही पड़ जा रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, हर बार बांध रही है, हर बार रस्सी कम। How is it possible? She got so much rope, all the ropes to Braja she brought, and somehow still wasn't enough to bind Krishna. तो ये कैसे हो रहा है? उन्होंने इतनी रस्सी लेके आए, पूरे व्रज में जितनी रस्सी थी वो ले आए, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो हर टाइम बांधने के समय कम पड़ जा रही है। This is Lord Krishna showing his inconceivable potency, just to bewilder the mind of Mother Yashoda. Mother Yashoda, she's a simple lady, a simple village lady, and she could not understand what was happening. She became just bewildered. What is wrong? Then Lord Krishna agreed, let Mother Yashoda tie me up. तो यहाँ पर कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं और वो नहीं बंध रहे हैं, और इस प्रकार माँ यशोदा को भ्रमित कर रहे हैं। तो माँ यशोदा सोच रही है, अरे क्या हो रहा है, ये बंध रहा क्यों नहीं है। तो अंत में कृष्ण मानते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अब मैं माँ यशोदा द्वारा बंध जाता हूँ। So this is the wonder of this pastime, the very special pastime which is being commemorated, not just one day, like other events like Govardhan Puja, we celebrated one day in the month.
But this Damodardesh, we celebrated every day for the whole month. ये इस लीला की बहुत विशेषता है. अन्य कोई भगवान का विशेष महोत्सव आता है, हम उसे एक दिन मनाते हैं, लेकिन ये पूरी दामोदर लीला को हम पूरे महीने तक मनाते हैं. So it's so special, it's so meaningful to the devotees as we consider how Lord Krishna is the Swayam Bhagavan, the original Supreme Personality of Godhead, and he's running in the courtyard being chased by his mother, and he allows his mother even to catch him. And then he allows his mother to tie him up. Although Krishna is the Supreme Lord, he cannot be captured or conquered by, he's conquered by the pure love of his devotee. तो ये भक्तों के लिए बहुत ही विशेष लीला है, क्योंकि यहाँ स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है और वो अपने घर के आंगन में भय से भाग रहे हैं और मां छड़ी लेके उनको डरा के भगा रही है. और हालांकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है जिसे कोई नहीं बांध सकता, लेकिन वो मां यशोदा द्वारा इस लीला में बांधते हैं. और इससे ये हमें पता पड़ता है कि भगवान को केवल शुद्ध प्रेम द्वारा ही बांधा जा सकता है. Now great yogis and gyanis and philosophers, mental speculators and rishis and sadhus, they're all trying to understand the supreme absolute truth. But that supreme absolute truth is being tied up by Mother Yashoda in her home. तो इस प्रकार से बड़े बड़े ज्ञानी योगी, जो बड़े बड़े मुनि हैं, संत साधु हैं, वो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही परम पुरुषोत्तम भगवान यहाँ माँ यशोदा द्वारा उसके घर में बांधा जा रहा है. So understand the very wonderful position of Mother Yashoda, that she's a greater devotee even than Lord Brahma or even Lord Shiva, but Mother Yashoda is above all of them. She is always the mother of Lord Krishna. तो यहाँ पर हम माँ यशोदा की विशेष स्थिति क्या है उसे समझ सकते हैं. तो माँ यशोदा बड़े बड़े देवी देवताओं से भी ऊंची स्थिति है, जैसे ब्रह्मा जी से, शिव जी से भी उनकी ऊंची स्थिति है कि यहाँ वो भगवान को बांध पा रही है. Now you may say, well, I thought Devaki is the mother of Krishna. Isn't Devaki the mother? She's the one who gives birth to Krishna in Mathura. What about, how does Yashoda become Krishna's mother? तो आप सब सोच रहे होंगे कि वास्तव में तो कृष्ण की माँ देवकी है, उसने जन्म दिया था कृष्ण को मथुरा में. तो यहाँ पर हम कैसे कह रहे हैं कि माँ यशोदा कृष्ण की माँ है? Because remember, at the birth of Krishna in the prison house in Mathura, Vasudeva brought the child Krishna over to the home of Nanda Maharaj. तो आपको याद होगा कारागार में जब कृष्ण को जन्म हुआ था, उनका जन्म होते हुए ही वसुदेव उस बच्चे कृष्ण को नंद महाराज के घर ले गए थे. He exchanged the baby born to Devaki and Vasudeva. He exchanged that child Krishna with, he took the girl who was delivered by Mother Yashoda and he brought the girl back to Mathura. तो उन्होंने बच्चों का अदल बदल कर लिया था. जो वसुदेव और देवकी को जो पुत्र जन्म हुआ था कृष्णा, वे उन्हें नंद महाराज और यशोदा माँ के घर छोड़ा है, और यशोदा मैया को जो पुत्री का जन्म हुआ था वो उसे वापस कारागार ले आए. And in this way, Krishna grew up there in the home of Nanda Maharaj, Mother Yashoda, and he had his childhood leela there. और इस प्रकार कृष्ण बड़े हुए माँ यशोदा और नंद महाराज के घर में, और वहां उनकी बाल्य लीला है. And the most wonderful pastime is this Damodardesh, Krishna being tied up by Mother Yashoda. और इसमें सबसे अद्भुत लीला है ये दामोदर लीला कि कृष्ण बंधे जा रहे हैं माँ यशोदा द्वारा. But there's another purpose in this pastime, and that is that Lord Krishna knows that the two sons of Kuvera had been cursed to become trees. परंतु इस लीला में भगवान का एक और उद्देश्य था. भगवान जानते हैं कि कुबेर के दो पुत्र, उन्हें श्राप मिला था और वो वृक्ष बने थे. And they were standing in the courtyard of Nanda Maharaj. Lord Krishna, with the help of the mortar, pulled it between the two trees, knocked over the trees, and when the trees were knocked over,
From out of the trees appeared the two demigods who were the sons of Kuvera. तो इस प्रकार से कृष्ण ने इस उत्कल का सहारा लेते हुए वो दो वृक्षों के बीच में गए, उन दो वृक्षों को गिरा दिया और उसमें से वो दो कुबेर के पुत्र वापस बाहर आए जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे. And these two sons of Kuvera, they fall down to Lord Krishna's feet and they offer obeisances to him and they beg forgiveness for their offenses. And Lord Krishna tells them, now you're devotees, you must be very careful to be good devotees. Now you can go back to heaven and you can stay there, but don't fall into Maya again. तो फिर इस वृक्ष से दो नल कुबेर मणिग्रीव निकलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं. अब कृष्णा उन्हें कहते हैं ठीक है, अब आप दोनों अच्छे भक्त हो गए हो, वापस अपने जो स्वर्गीय लोक हो है वहां जाओ और दोबारा माया में मत गिरना. In heaven it's easy to get into Maya. स्वर्ग में आसान है माया में फंस जाना. So you also have to be careful here in Dubai, right? आपको भी यहाँ सावधान रहना है. Don't get into Maya. माया में मत फंसना. So in this way, one pastime, Lord Krishna was able to fulfill many purposes. तो इस प्रकार एक ही लीला से भगवान कई उद्देश्य किए हुए. So we are observing this Damodarastikam. We sing the wonderful song Damodar, the 8 verses of Damodarastikam, glorifying the pastime, and we also offer one lamb to Krishna. तो इस महोत्सव को मनाते हुए हम दामोदर अष्टकम, ये जो गीत है इसमें 8 श्लोक हैं, ये भी गाते हैं और साथ साथ भगवान को घी का दिया अर्पित करते हैं. Other things, you know, somebody does puja, one person does the arti, but Damodar, everybody can offer the lamb. तो अन्यथा जब कोई पूजा करता है भगवान की, एक ही पुजारी होता है, एक ही आरती पुजारी करता है, लेकिन दामोदर घी का दिया तो सब मिलकर दिखा सकते हैं. And by offering the lamb, you get great benefit. It destroys a lot of bad karma from our past. और घी का दिया दिखा के आपको बहुत लाभ प्राप्त होते हैं. हमारे पिछले जन्म के कई पाप वो नष्ट हो जाते हैं. There's a story about one young lady, Lalitika. She was a princess. And she was very beautiful and very opulent, born in a very wealthy family. And she's very beautiful. And in the month of Kartik, she would offer thousands of lamps everywhere. She would light lamps all over the temple, and she would light lamps every doorway, and she would light lamps along the side of the river, and she'd put lamps on the mountains. And she would even light lamps on the wells. तो एक स्त्री की कथा है, ललितिका उसका नाम. बहुत एक वो रानी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ऐश्वर्य था उसको. तो कार्तिक के महीने में वो हर जगह दिए भगवान को दिखाती थी. मंदिर में दिए लगाती थी, मंदिर की चौखट में, पर्वतों पर, नदियों पर, पूरे शहर में, और यहाँ तक कि कुएं पर भी वो दिए रखती थी. She would do this every day during the month of Kartik. और वो ये कार्तिक के महीने में प्रतिदिन किया करती थी. So all the other people in the palace, they were all surprised that, you know, why she does like this, you know, so many lights every day. Why? And so they asked her, please, can you tell us why you're doing this? She said, well, do you know who I was in my last life? तो जो सब और महल में थे वो ये देख के आश्चर्य में पड़ जाते थे, क्यों आप इतना हर रोज जाके हर जगह दिया रख के आ रहे हो, हमें बताओ. तो महिला बोलती है, अच्छा आपको पता है मैं मेरे पिछले जन्म में कौन थी? She told them, she said, my previous life I was a little mouse, and I was living in a temple, and I was very hungry. There was no food. I was so hungry. तो कहती है, आपको पता है मैं मेरे पिछले जन्म में एक चूहा थी और मैं एक मंदिर में रहती थी और वहां खाने को कुछ भी नहीं था और मुझे एक दिन बहुत भूख लगी थी. But she said,
someone offered a ghee wick. They had a ghee wick burning, and I came forward and I began to taste the ghee on the wick, and it was so nice. I began to eat the cotton wool. I was eating the wick. But as I was eating, a big cat appeared. उन्होंने कहा तो मैं किसी ने ना घी में डुबा के दिया रखा था, भगवान को अर्पित किया था, तो मैं आई, तो जैसे ही मैं वो घी चखने लगी, हाँ मुझे बहुत स्वादिष्ट मिला, और जैसे ही मैं उस कपास जिस पे घी लगा हुआ था उसको पूरा खाने लगी, तो एक बहुत बड़ी बिल्ली वहां आ गई. How would you feel? A big cat appears. If you're a little mouse and this big cat comes, you'll be terrified, right? So the little mouse saw the cat, but he's eating the ghee wick at the same time. He was so hungry, he couldn't give up the ghee wick. He ran away with the wick in his mouth. The ghee wick was burning, and he ran away, but the ghee wick somehow set fire to the body of the mouse. आपको कैसा महसूस लगेगा अगर हम चूहे हैं और एक बड़ी बिल्ली आ जाए, तो हम बहुत भयभीत हो जाएंगे. तो इसी प्रकार वो चूहा भी भयभीत हो गया और वो घी खाना छोड़ नहीं रहा था, उसे घी भी पसंद था, तो वो घी का वो जो कपास से लगा हुआ घी है और वो जो जल रहा है दिया, उसे लेके भागा बिल्ली को देखते हुए. लेकिन कुछ ही समय में वो जो आग थी उस दिए की, उससे इस चूहे का पूरा शरीर पे लग गई वो आग. And the mouse was on fire, began to, jumping, dance, like it was dancing. It was actually jumping because it's burning, but he was dancing in front of the deity. And during this month of Kartik, this happened. He was dancing in front of the deity, and this way, mouse gave up his body. Next life, he was born princess. तो इस प्रकार जब उसके शरीर को आग लग गई, तो वो उछल रहा था, कूद रहा था चूहा, है ना, जब दर्द के मारे, परंतु भगवान के आगे उछल रहा था, कूद रहा था, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था वो भगवान के आगे नाच रहा है. और कार्तिक का महीना था, तो इस प्रकार भगवान के आगे नाचते कूदते हुए उसने अपना शरीर त्यागा और अगले जन्म में वो ये रानी बनी. So Lord Krishna thought, this little mouse is dancing for my pleasure. They gave him the very good birth in the next life. भगवान कृष्ण ने सोचा ये छोटा सा चूहा मेरे आनंद के लिए नाच रहा है, तो उसे अगले जन्म में बहुत अच्छा जन्म प्रदान किया. So Lalitika, she said that if I got all that benefit just by one light, that's why I'm offering so many thousands of lights. You see, I want to get the greatest benefit in the next life. ललितिका ने सोचा अगर एक दिए से मुझे इतना लाभ प्रदान हुआ है, तो इसलिए मैं हर जगह असंख्य दीप लगाना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में और बेहतर लाभ प्रदान. Of course, we don't just simply want to be a princess. You don't want to be so very wealthy and very beautiful. That's very temporary. That's finished with the body. We want to get something more than that. We want to get the greatest gift. Eternal life. तो बेशक हम ये दीप कोई बड़ी रानी बनने के लिए नहीं दिखाते हैं, केवल हम इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य या अच्छा जन्म नहीं पाना चाहते हैं. ये सब तो समय के साथ शरीर के साथ समाप्त हो जाता है. हम तो उससे भी ऊंची चीज चाहते हैं, जो सबसे उत्तम चीज है. We want to get free of birth and death. That is something more than any material benefit. हम जन्म और मृत्यु से निकलना चाहते हैं. ये कोई भी भौतिक लाभ से ज्यादा लाभ है. So that's the idea of offering the lamp to the Lord, that we want to please the Lord, we want to develop our devotion. ये कारण है हम भगवान को घी का दिया दिखाते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और भक्ति चाहते हैं. And it's by devotion we can actually get the perfection of life. और ये भक्ति द्वारा है हम जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं. Are there any questions? अगर अभी आप में से किसी को कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं. Rani, Lalitika, she offered ghee lamp for her own benefit. She wanted something more. Materially, I think
So is it okay to think like that? It becomes a material life again. Well, does she necessarily want something material? She wants to get certainly more benefit. She already had everything materially, but she must have understood that there is something more than just simply material benefit. In this life of ours, we should think about spiritual life, not the material thing. We should not ask for. Well, material things you get according to your karma, right? Everyone's suffering and enjoying according to our karma, according to the past. And so that's arranged by destiny. We say destiny. But spirituality, our opportunity to develop our spiritual life, that doesn't depend on karma. The opportunity to develop your spiritual life depends on mercy. The mercy which comes from a devotee, that somebody, invites you to go to the satsang, somebody gives you a book, or somebody gives you prasadam, or somebody tells you come for this program, festival, maybe. That kind of mercy, which gives us the opportunity to contact devotees and to develop the path of bhakti. तो माता जी ने पूछा कि ये जो रानी ललिता थी वो भगवान को भौतिक चीज के लिए दिए दिखा रही थी, तो क्या ये सही है? तो महाराज जी ने कहा हमें पता नहीं है वो भौतिक के लिए दिखा रही थी या नहीं, क्योंकि पहले ही वो रानी थी, उसको शायद पता होगा कि इससे भी ऊंचा कुछ प्राप्त करने के लिए है। फिर माता जी ने कहा कि महाराज क्या हम जब कुछ ऐसा करते हैं हम भौतिक के लिए नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक के लिए? तो महाराज ने कहा हाँ, भौतिक चीजें हमारे पहले के किए गए कर्मों से हम तक पहुंच जाएगी। हर कोई कुछ भोग कर रहा है, कुछ सुख भोग रहा है या दुख भोग रहा है अपने पहले के कर्मों की वजह से, लेकिन हमें आध्यात्मिक चीज का प्रयास करना चाहिए जो कर्म पर निर्धारित नहीं। आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है कोई भक्त की कृपा से। कोई भक्त आपको कहेगा अरे आओ आज ये सत्संग में आओ या आरती के कार्यक्रम में आओ, तो भक्त की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। प्रभु इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न जिज्ञासा है कि भक्त की कृपा से हमें ऐसा अवसर मिलेगा कि वो हम पे दया करेगा, तो वो भी तो हमारे कर्मों की ही कुछ सुकृति होगी, ऐसे ही तो नहीं मत दया हो जाएगी हम पे। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ। Maharaj, in continuation to this question, her question is that Maharaj, you said that we get devotion by the mercy of a devotee. So Mataji is saying, then I feel that it is also due to my some karma only my devotee will feel merciful upon me. So then it again comes down to karma. Is that the right understanding she's saying? No. Right. It doesn't just come down to karma. Right. Devotion doesn't depend on karma. It depends on the devotee, that they're giving bhakti. You get bhakti from somebody who has bhakti, from a devotee. They give you bhakti. It's not to do with your karma. People, we see it, all kinds of people come to Krishna consciousness. Now, some people may have very good karma, but they're not devotees. There aren't people, they're very much in the mode of goodness. They have a lot of piety, material piety, but they may not be devotees. Why not? Well, they're happy. They just feel satisfied with what they have. They don't want to accept the path of devotion. So everybody has independence. They have that free will.
to accept devotion or not. They don't want to accept devotion. Krishna doesn't force anyone. They have the free will. But it doesn't depend on karma. And we see sometimes people with very bad karma, they have a lot of very bad karma, but they can be very good devotees. महाराज कह रहे हैं ये कर्म पर नहीं निर्धारित होता, भक्ति के नहीं। और बहुत बार हम देखते हैं कई लोगों को बहुत अच्छे कर्म होते हैं लेकिन वो भक्त नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म से जो उनको लाभ प्राप्त हो रहा है वो उसमें ही संतुष्ट होते हैं, वो भक्ति में नहीं आते। और कभी कभी कोई लोग होते हैं बहुत बुरे कर्म किए होते हैं लेकिन वो भक्त बन जाते हैं। तो भक्ति आपके कर्म पर निर्धारित नहीं है। Maharaj, what she was actually asking is also that will I get mercy of another devotee if I have the karma to get it or no? Like that's what she wants to. Well, it doesn't depend on you. It depends more on the devotee. जो आपको भक्त आपको कृपा दे रहा है उस पर निर्भर है, आपके कर्म के वजह से वो आपको कृपा देगा ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु भक्त से भी कई बार हम ऐसे मिलते रहते हैं कि सडनली हम लोगों को भक्ति का रियलाइजेशन होता है, मतलब सडनली नॉर्मली मिलते रहते हैं लेकिन हम अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन एक स्विच टाइम आने के बाद हम सडनली। Mother is asking, many times it happens we meet devotee yet we don't feel attracted to bhakti, and then after being in touch with a devotee there comes a particular point and only from that point we feel attracted to do bhakti. Maybe like that. But what is happening? You initially contacted the devotee and you didn't feel attracted to it. But the devotee, just by his presence, he had some effect on you. That you were not initially attracted, but after some time, maybe, you know, in the beginning, you think, no, this is not for me, I don't want. But then somehow later on, gradually, we think, actually, I need this. This is something which is good for me. So there is, although initially you didn't accept it, but it had some effect. And then later on, it becomes more possible, but it becomes possible for you to take up bhakti. महाराज कह रहे हैं ऐसा होता है कि जब आप पहले भक्त से मिलते हो शायद आपको भक्ति से आकर्षण नहीं होता है, लेकिन जब आप भक्त से मिलते हो तो वो कुछ प्रभाव छोड़ जाता है आप पर, और इसलिए कुछ समय के बाद आपको भक्ति से आकर्षण होता है और आप सोचने लगते हो कि नहीं शायद मुझे भक्ति करनी चाहिए। तो उससे वो मुलाकात व्यर्थ नहीं जाती है। वो जब आपसे मिलता है तो कुछ असर उस मुलाकात का रहता है, और यही कारण है कि थोड़े समय बाद आप भक्ति में जुड़ते हैं। Sometimes coming to Krishna consciousness in the beginning, you know, think, no, I think this is not really for me. I think I'm not ready for this yet, you know, and we want to go out and have some more sense gratification, and, you know, and then we think, actually, I should go back to Krishna, I take up Krishna. So we see like that sometimes in the beginning, people are restless that, no, I'm not ready to take up, to do all this, and what's required to be a devotee, I'm not ready to follow. But then, you know, gradually it starts to make sense, and somehow the impressions are there. And so the initial impression had some effect. Although in the beginning we didn't immediately take up Krishna consciousness, but the initial impression was there, it had some impact, had some effect on us. And later on we come back to Krishna. महाराज कह रहे हैं कि जो भक्त से पहली मुलाकात होती है उसका कुछ असर तो रहता है, और कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि कोई भक्ति के बारे में सुनता है, आता है कार्यक्रम में और सोचता है वो ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं करूंगा, और वो फिर बाहर जाता है, इंद्र तृप्ति के कार्य में लगता है, फिर कुछ समय बाद आता है, नहीं मुझे शायद भक्ति करनी ही चाहिए, वो सोचता है। तो कहते हैं महाराज कह रहे हैं कि ये उस भक्त का पहली मुलाकात का ही कुछ असर प्रभाव होता है, जो शायद थोड़े समय बाद ही आप भक्ति में आए, लेकिन उसका प्रभाव जरूर होता है। And Raj, I just wanted to ask, like, we are praying to God, so like we of course want the devotion of Lord, the mercy of Lord, but
in a way we also want some material things. So is it okay to ask Lord for the material things also? I know devotion is of course more important, but we are like little bit, I don't know, I'll call selfish or what. Um, but we do ask. So is it okay or we shouldn't be asking? Yeah, it's okay. It's better to ask the Lord than to ask somebody else. That only Lord can. बच्चों को अट्रैक्ट करवाने के लिए उनको बोल सकते हैं क्या कि जैसे भगवान जैसे प्रेयर करोगे तो जैसे कोई स्टोरी बता के कि ऐसे उन्होंने मर्सी दी मांगना तो भगवान ने ये सब कुछ दिया उनकी तो क्या Mataji is saying that is it okay when we preach to kids, we tell them that see in this past time they did this and they got this material benefit. So in that way can we make the kids worship the Lord by giving them some material falastuti kind of, you know, like. Yes, these incentives are there to attract people in the beginning. तो हाँ, इस प्रकार के लोगों को शुरुआत में आकर्षण करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो. Later on, we find out that, you know, well, if Krishna wants us to have these things, he'll give us. If we need them, Krishna will arrange them. And if he doesn't give them, then we should think that Krishna thinks maybe this is not good for me. For our benefit that he's not giving us. Yeah. तो पहले जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो हम ऐसे पहले प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे तो हम समझ जाते हैं कि अगर कृष्ण को चाहिए ये मेरे लिए लाभदायक है तो कृष्ण खुद मुझे दे देंगे, और अगर कृष्ण ने मुझे नहीं दिया तो शायद ये मेरे लाभ के लिए नहीं. Now you mention about this Damodarila when he was in Krishna in the Kumar Avastha, that time happened. But then for Kaliya Daman he did, so that time he was in the which age? He is in Poganda or he is in Kumar Avastha? Kaliya Damana, that's older, much older. Yes. But before of course. Well, no, he's still in Braja, but either Poganda or Kaishore. I'm not sure what age he would be, but Kaliya comes. Does it come before the Govardhan Puja or after Govardhan Puja? I think so before. Well, if it's before, then it's Poganda. Poganda. Yeah, because Govardhan Puja took place. Krishna was, I think, 7. Okay. Hare Krishna. I have a question. Like we do Deepdan physically every day go to Damodara, and suppose like somebody's gone to Vrindavan, any friend, and can we do more Deepdans through our friend? Though we are not available physically there, any friend is available. She's gone to Dham, so through her also we can do Deepdan in the temples or in India through relatives. Can we do Deepdan through them, though we are not physically available there? This is my question. Well, you can do it, but it's not going to be the same as doing it yourself, of course. But you can certainly offer some service there. You can do the Deepdan here. It's not that you have to. In fact, the Dham is wherever Krishna is, right? So if you're in Krishna consciousness, your home can also be Dham. Srila Prabhupada was in America, but he said, I'm always in Vrindavan because I'm always thinking of Krishna. So if you have your home Krishna conscious, then you can also consider the home to be like Dham, and you can offer the Deepdan there. But people could also do it on your behalf, but it depends a lot on their attitude. They're going to do it for you. What is their attitude? So ultimately, we should really do these things for ourselves. माता जी ने पूछा कि अगर कोई और धाम गया हुआ है तो क्या हम उनसे कह के दीपदान करा सकते हैं हमारे लिए? तो महाराज ने कहा करा सकते हो, लेकिन खुद करने जितना लाभदायक नहीं होगा.
और अंत में वृंदावन वहां है जहां कृष्ण है। तो अगर आपके घर में भी कृष्ण विराजमान है और आपकी सही भावना है तो वो भी वृंदावन है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, लेकिन वो कहते थे कि वो अमेरिका में नहीं है, वो वृंदावन में, क्योंकि वो हर समय कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम सही मनोभाव से करेंगे तो वो बेहतर है। और जब हम किसी और को देते हैं दीप दान करने के लिए, वो किस मनोभाव से कर रहा है हमें पता नहीं होता। तो बेहतर है आप ये कार्य खुद कीजिए। Yeah. There's also a pastime which I didn't tell you, but maybe since you're all here, so just to tell you that even someone doesn't do any of the worship, but if they simply see another person doing it, then they get 1/6 of the benefit. And there's a famous pastime which is told, which is taken from one of the Puranas, which tells about one man who he saw a lot of people doing the Damodara puja, and he saw people during this month of Kartik, you know, people make vows, they do things like fastings and they do extra chanting, and so he happened to see all these people doing a lot of vows, you know, some were doing puja and kirtan, some were offering lights. He'd never seen people do these things before. And this man was sinful. And somehow he was seeing these people do all of these things. And it just came to the end of the month of Kartik. Just on the very last day of Kartik, a big snake appeared and bit this man. And it was a poison snake. So the man fell unconscious and he died. And so he was taken, his subtle body was taken by the Yamaduts. They took him to Yamalok. And Yamaraj asked Chitragupta, so who is this man? What has he done? And Chitragupta said, he's a very sinful man. He never did anything good. All sins. So Yamaraj said, take him to Kumbhipakaloka. You know Kumbhipakaloka? You know that place? No. No, what's that? They have a big wok of boiling oil. And they put the people into the boiling oil. You know, the subtle body. You go to Yamalok, the gross body doesn't go. We give up the gross body. The subtle body goes. They take the subtle body and they do things like, you know, put you into the boiling oil. So, subtle body, you experience pain, but you don't die. So they put this man, they threw him into the boiling oil. But as soon as he contacted the boiling oil, it all became cool. And all the Yamadutas were very shocked. They said, oh, we never saw anything. What happened like this? This is very strange. And so that time Narada Muni came there, and Narada Muni told them, he said, you know, you're not going to be able to punish this man. And the Yamadutas said, why not? He's very sinful. He did so many bad things. Narada Muni said, yes, but you have to understand, during the month of Kartik, he never did anything, but he saw the people doing all the worship. He saw people offering lamps, and he saw people bowing down and doing the work. He got 1/6 of the benefit of all of their activities. So all of his sins are destroyed. So you can't harm him anymore. So they said, well, he's come here, we'll take him around. We'll give him a tour of Yamalok. And after he went around Yamalok, then he went to heaven, to Kuvera, to be with Kuvera, to be an assistant of Kuvera. He didn't go back to Godhead, but he went to heaven with plan. So that's the benefit, you know, even people are sinful. If they just watch and they just see, they get benefit.
So, you know, sometimes family members and relatives, you know, they're not favorable, they're against it. But if they just see you do these things, they get benefit. This second part, what you said, which feels pain, so it is made of mind, intelligence, and ego parts. So it like if we have soul, then only we feel pain. If soul goes out of the body, we are just dead. So this second body, like you know, it has what like it has a form. Means it has the soul so that it feels pain, or it is without soul, the subtle body which feels pain in the like Kumbhi Park nerve. So it is made of what? This body. The subtle body? Yeah. Well, what's it made? It's subtle. It's not made of, what can we say? If it's something is subtle, then it's just, it's not made of anything really. It's subtle. Is it formless? Well, a subtle body, we have a subtle body. Question is that Maharaj, her question is that does the soul also go with the subtle body? Yes, the soul goes with the subtle body. The soul has to be with the subtle body. You don't have a subtle body without the soul. The soul has to be there. but we are heard the soul cannot be killed, cannot be That's right. torn, Yes. cannot be born. So the soul goes with the subtle body, goes with the soul at the time of death. Yeah. The subtle body, you see, subtle body is accompanying the soul, it carries the desires to the next body. Right? But subtle body can gradually be dissolved, can be purified as we become more qualified to get out of material life. We have to give up the subtle body. So the subtle elements will go back to the subtle elements, to the universal elements of the material nature. And when to go back to Godhead, you don't have the subtle body. Just the soul, right. Yeah. So the subtle body is what's carrying us to the next body, to the next life. Maharaj, I wanted to ask, what is more important, doing good deeds or doing bhakti? Well, doing bhakti is more important than doing good deeds. Doing bhakti, what do we mean when we say doing bhakti? We mean Shravanam, Kirtan, Smaranam. There are 9 angas of bhakti, the 9 limbs of bhakti. That's what bhakti actually is. And most important for us is the hearing and the chanting. Now you do good deeds. You do good deeds in the material. What are good deeds in the material world? You have to tell. When you say do good deeds, what kind of good deeds? Doing, like if someone needs your help, you help the person, or you don't do something back for someone. Whatever way you can be useful to someone. Well, how can you be useful to someone? You have to understand, what does it mean to be useful to someone? You give someone some money, are you being useful to them? And they take your money and go and buy alcohol or cigarettes or cook meat? No, Or... not that way, but if someone is in need, like, well, what did they? whatever means you can help, like medically or whatever way. Yeah, okay, you're going to help them materially. You give some blood for people. Maybe you give blood, you donate blood. So in the future, you'll get blood.
When you need blood, then you get the blood back. Somebody will give you blood. You give blood, you you give money, if you do something to help the poor, maybe you build the old people's home. In the future, when you're old, you can go and stay in the old people's home. You help the young girls to get married, to find a husband. In the future, next life, you'll also get a husband. So Maharaj, we shouldn't help the old people like in the old age home, like if they need like. Well, you should know how to help them. How to help them. How He can give food by offering it to Lord Krishna. Yes. We can give it to Yes. Yeah, you offer the food, give that. That's devotional service. That's bhakti. You give them prasadam. That's bhakti. Yeah. Right? You want to help people, give them prasadam. Generally, you know, people come, they want money, we'll give you prasadam. Take some prasadam. Some of the pujaris in the temple, when you give something, they ask for the dakshina, the donation on the top of it. So whether we should be giving it to them or not. Because they're working, we don't know. Otherwise, we are helping the Vaishnavas only. That way, or offering the food or giving money only after offering it to the Lord. Well, how to offer it to them? Pujari should be doing service on behalf of the temple. So you give money to the pujari, it should go to the temple, not for the pujari. You give the money to the pujari should give receipt. This is for the temple. You know, sometimes like you want to do a special puja or something, some archana or something. So the temple may have a fixed, 100 rupees or something like, and you give to the, and then that goes to temple. But some of the pujaris, like they're sitting outside and doing all these works. So then you give like that. You have to figure out which one is the pure Brahmana, which one is the pure soul. You have to consider what, how is he living? Is he eating meat? Is he a Kali Yuga Brahmana? Or is he actually a Vaishnava? People who are there, they are Karma Kandi Brahmanas. Karma Kandi Brahmana, then it's hopeless. Not going to benefit you. It's Karma Kanda, right? You give them some money, what benefit will you get? Material benefit. Some little, maybe. Not recommended. That is a standard. Brahminical culture has become karma kandi culture. Just simply business. So we have to understand, we have to judge for ourselves who is actually the worthy person. Because we don't know what they are doing going up the table. Right, yeah, you don't know. Right? That's the risk you take. They have that, Prabhupada said that how there was this one man in Bengal, there was a picture. The money was on the table and he was like this. He said that he wouldn't touch money. And people said, oh, he's a great Brahmana. But actually, below the table he had a lot of money. And Prabhupada said, you can give me the money. He said, I'll count it better than the bank teller. And I'll spend it all for Krishna. So, and they were asking before, there were gurus with so many big cars. And they were asking Prabhupada, are they all cheaters? And Prabhupada said, the one on the bicycle may be cheater. He said, just because they're in a big car, it doesn't mean they're cheater. You have to look, you have to hear what they say. What are they doing? You can't just judge by who has the big car. The one on the bike may be the cheater.
You don't know. So you cannot judge material. Okay, Hare Krishna. So maybe we will do Damodar Puja now.